Now for the story of Antigone. Or shall I say the tragedy of Antigone and Creon. This creature, staring straight ahead, seeing nothing, is Antigone. She's thinking. She's thinking that as soon as I finish telling you about who's who and what is what in this play, she will burst forth as the tense, willful girl whose family never took her seriously and who is now about to rise up all alone against Creon, her uncle, the king. Another thing that she's thinking is this. She is going to die. Of course, she'd much rather live than die. But when your name is Antigone, what choice do you have? This grey-haired man lost in thought is Creon, the king. He practices the difficult art of a leader of men. When he was younger, when Oedipus was king, and Creon no more than the king's brother-in-law, he was different. He loved music, bought rare manuscripts. He was a kind of art patron. He used to while away whole afternoons in the antique shops of this city of thieves. But Oedipus died. The sons of Oedipus died. Creon had to roll up his sleeves and take over the kingdom. Creon has a wife, the queen. Her name is Eurydice. She's upstairs in her chamber knitting jerseys for the poor. And there is Ismene, Antigone's sister. She is frightened and agitated. She has to choose between life and death. She too would much rather live than die. And there is Hemant. नाटक का नाम है एंटिगनी और ये जां आनूई नाम के एक फ्रेंच राइटर ने लिखा है. ओरिजिनली ये ग्रीस यूनान देश में सबसे पहले लिखा गया था कुछ 440 BC ईसा पूर्व 440 में. तो उसका सॉर्ट ऑफ री अडेप्टेशन सत्यदेव दुबे जी ने किया है, जिन्होंने डायरेक्ट भी किया है नाटक को. और कहानी है एंटिगनी और क्रेयॉन, जो कि उनके अंकल और देश के राजा है, उनके बीच का जो तनाव है उसके बारे में कहानी है. एंटिगनी आई सपोज इंडिविजुअल्स का एक सिंबल है, इंडिविजुअल का सिंबल है, द पर्सन हु आस्क्स द क्वेश्चंस. एंड क्रेयॉन समाज का सिंबल है, जो कि व्यवस्था पसंद है, जो कि सही तरीके से अपनी सही रूल से कायदे से जीना चाहते हैं. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, रियली उसी के बारे में नाटक है. Who is he? Not somebody you can bring home to your family and say, this is him and I mean to marry him and no other. That's how it is. Answer me! Yes, she says. Yes, she says. I may only be your nurse and you could lay deaf and dumb with me. I don't count. But your Uncle Creon will hear of this. That I promise. Yes, Uncle Creon will hear of this. Then we'll have to hear what he says when he finds out that you go running off to... Nanny, don't scold, dear. Not scold, indeed. Along with the rest of it, I'm supposed to like it. I promised your mother. What would she say if you were here? 2500 साल पुराना ये नाटक है, और ये पुराना है और ग्रीक प्ले है और आज भी ज़िंदा है. यूरोप में बहुत पॉपुलर था. बाद में जब जर्मन लोगों ने फ्रांस को ऑक्यूपाई किया तो जान आनवी ने इसे अडैप्ट किया और उसने इस पात्र को
एंटिगनी के पात्र को एक तरह से जर्मनों के विरुद्ध विद्रोह करते हुए दिखाया, लेकिन क्योंकि सेंसरशिप थी तो उन्होंने क्रेयॉन को भी अच्छा आदमी बताने की कोशिश की, लेकिन उस समय फ्रांस में एंटिगनी बिकेम द सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। ये एक अंडरग्राउंड मूवमेंट हो गया कि आप सेंसरशिप है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते जर्मन्स के खिलाफ, लेकिन एंटिगनी बिकेम अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट और सब ने मान लिया कि जर्मन्स बुरे हैं, और जो कि बुरे थे उस समय। ये नहीं, तो यही चीज़ अब समय के साथ बदलती जा रही है। जब सोफोक्लिस साहब ने 2500 साल पहले लिखा था, संघर्ष यही था, व्यक्ति और समाज। जान अनवी में भी संघर्ष यही है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है कि एंटिगनी बिकेम अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। हम जिस स्थिति में हैं और आज के ज़माने में मैंने जो अडेप्ट किया है, भाषा अंग्रेज़ी की है और ज़्यादातर जान अनवी साहब का ही नाटक है, लेकिन संदर्भ बदल गया। हिंदुस्तान में हो रहा है, कर अंग्रेज़ी में रहे हैं लेकिन हिंदुस्तान में हो रहा है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ऑडियंस अपनी प्रतिक्रिया दे कि उसी स्थिति को जब हम सीधे एक व्यक्ति और समाज या समाज के अधिकारी के बीच का संघर्ष बताते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच इमर्ज, और उसका हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है कि नहीं है, कि केवल हम हवा में बातें कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो कुछ थोड़े से लोग यहाँ आएँ, इस नाटक से उन्हें तकलीफ़ तो होगी, और ये तकलीफ़ ही इस नाटक का मज़ा है, और सही अर्थों में अच्छे नाटकों का मज़ा वही तकलीफ़ है, जिसको कुछ लोग मज़ा कहते हैं, हम उसे तकलीफ़ कहते हैं। Creon's son, the king's son. One night after a dance party was over, suddenly he went in search of Antigone. He saw her sitting all alone and asked her to marry him. She looked up at him out of those solemn eyes of hers, smiled sort of sadly and said, yes. And that this princely distinction was to earn him no more than the right to die sooner than he might otherwise have done. This pale young woman is the messenger. Later on, she'll come running to announce the death of Haman. She has a premonition of catastrophe. She will also have to announce the death of Queen Eurydice. When shall we three meet again? When the hurly-burly's done. Where the place? At the watch. Fair is foul, foul is fair. Over through the fog and filthy air. As for these three red-faced card players, they are the guards. One smells of beer, another of garlic, but they're not a bad lot. They have wives whom they're afraid of, kids who are afraid of them. They too are bothered by the little day-to-day worries that beset us all. But at the same time, they are policemen, eternally indifferent, eternally innocent, no matter what crimes are committed. They are quite prepared to arrest anyone should the order be given by a new leader. To the watch. To the watch. झगड़ों की बात करते हैं, किस तरह के झगड़ों की बात करें सत्यदेव जी, रत्ना जी? क्या सेट पे कभी इस तरह के रिहर्सल के दौरान किस तरह के झगड़े होते हैं प्ले के दौरान? झगड़े होते हैं प्ले को सुधारने के पीछे, और ओपिनियंस अपने अपने होते हैं, और जैसा कि आपको मालूम होगा जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस वाले लोग हैं, तो कभी कभी एक दूसरे के साथ ओपिनियंस क्लैश होते हैं, पर्सनल किस्म के झगड़े नहीं होते। तो मजबूत कौन साबित होता है फाइनली निष्कर्ष निकालते? पंजा हम लोग लड़ते हैं, पंजा जो मोड़ दे पंजा, बस जो दूसरे का पंजा दबा दे उसकी बात चलती है। नॉर्मली दुबे जी दबा देते हैं पंजा से। देखा जाए तो काफी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है, लेकिन देखा है पता भी है कि जब प्ले डायरेक्ट करते हैं तो काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, अपने जो कहते हैं उसी को मानते हैं और उसी तरफ से जाना चाहते हैं, तो आपको फ्लेक्सिबल काम कर दे
होता है या उनका ही बात मान के आप आगे चलते हैं? मुझे लगता है एक्टर का काम है डायरेक्टर की बात मानना, क्योंकि एक्टर अपने ख्यालात जो है वो जाहिर नहीं कर रहा है अपने काम में, वो दूसरों के आइडियाज़ को प्रकट कर रहा है और उन आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए डायरेक्टर ने कुछ सोचा है, उन बातों को मानना मेरे ख्याल से एक्टर का फ़र्ज़ होता है। अगर डिसएग्रीमेंट्स हों तो वो जाहिर करने चाहिए। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी, मेरे साथ तो कभी ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ है कि अगर मैंने कोई राय दी हो जो मुझे जायज़ लगी हो, वो डायरेक्टर को भी जायज़ ना लगी हो। ऐसा बहुत कम तजुर्बा हुआ है और दुबे जी के साथ तो बिल्कुल। नसीर जी, लेकिन फिर भी जब सत्यदेव जी ने इस रोल के लिए आपको पूछा तो क्यों आपने हाँ कर दी? और फिर एक बार हाँ मैंने इसलिए की कि दुबे जी ने पूछा कि ये रोल करोगे, मैंने कहा हाँ करूँगा। उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं थी, क्योंकि दुबे जी के काम से तो आप सब लोग परिचित हैं। जो कुछ उन्होंने किया है, जो उनका हाथ है आज के थिएटर को बनाने में, तो दुबे जी जब भी जो नाटक करना चाहें और मुझे उसमें जो भूमिका देना चाहें, मैं करने को तैयार हूँ। Oedipus had two daughters, Ismene and Antigone. He also had two sons, Eteocles and Polynices. When Oedipus died, it was agreed that the two sons should share his throne, each to reign over, fought and killed each other just outside the city walls. Now Creon is king. Creon has issued a solemn edict that Eteocles, with whom he sided during the war, is to be buried with pomp and honors, and that Polynices is to be left to rot. The dogs and the vultures are to feed themselves on his carcass. No one is to mourn for him. No gravestone is to be set up in his memory. And above all, any person who attempts to give him religious burial will himself be put to death.